Hello guys, welcome back to Ansarkari. So today topic is going to be about the expenditure method. So this is the second method that we'll be discussing about the national income accounting. And let's start with it. So since the name is expenditure method and we're talking about calculation of the GDP. Give me a moment. So since we're talking about GDP calculation and here the method name is expenditure method. So the basic idea that you can try to decipher by reading the name itself is that will be sum totaling the entire expenditure being done in the economy in order to get the final value of GDP. So here we'll be talking about demand side of the products because if you're talking about consumers, so consumers जो demand करेंगे of the goods and services, उस पे वो लोग कुछ expenditure करेंगे some part of their income and उस expenditure का total करके will get the GDP. So consumer, they're one stakeholder. Then we will be having other stakeholders in the form of government. There would be investors, and likewise we'll cover all of them in detail. So simply saying, जो process है, we will add the final expenditures that each firm makes. So which is undertaken not for the intermediate purposes. So उस expenditure को हम count नहीं करेंगे. तो यहाँ पे भी you need to keep this thing in mind कि final expenditures को ही हम total करते हैं. जो expenditure किया जाता है for buying intermediate goods, that is not taken into account. So aggregate value of output of the economy is, let's say, rupees 200. जो हमने previous lecture में example लिया था of the bread maker and the farmer. So bread makers, they were making bread worth rupees 200. So aggregate value of output in the economy, this is rupees 200. This is the final expenditure जो baker receive करेंगे क्योंकि जिस price पे वो लोग bread sell कर रहे हैं, that is rupees 200. तो 200 rupees की suppose को consumer ब्रेड बाय कर लेता है तो दिस इज द एक्सपेंडिचर अमाउंट जो बेकर को रिसीव होगा प्लस ₹50 जो बेकर्स बाय करेंगे एज द फाइनल एक्सपेंडिचर जो बेसिकली फार्मर्स रिसीव करेंगे क्योंकि उन्होंने 550 रुपीज वर्थ का जो वीट है वो बेकर्स को सेल किया था. तो फाइनल एक्सपेंडिचर फॉर फार्मर्स जो वो रिसीव कर रहे हैं, फार्मर्स खुद कर नहीं रहे, वो उनको मिल रहा है इन रिटर्न फॉर सेलिंग ₹50 वर्थ ऑफ wheat in the market. All right. So we'll get the aggregate value of output in the economy through this expenditure method to be rupees 250 per year. All right. Then consumption expenditure, यहाँ अब हम components की बात करेंगे जो technical terms हैं that will be adding up to get the final value of GDP. So one component is the consumption expenditure. So इसमें households would be the one stakeholder. जो लोग consumption expenditure करेंगे, even firms would be doing some amount of consumption expenditure. So here the symbol would be C, that capital C that will be using to denote the consumption expenditure being done in the economy. So mostly we'll take it कि households would be doing it, and apart from that firms भी कर सकती है, they'll be buying something non-durables to treat their guests, even their employees. So this is one component, consumption expenditure. Second is the final investment expenditure that will denote by capital I, and this would be incurred by other firms on the capital goods which are produced by different firms. So firms would be undertaking investment expenditure in the economy. So this becomes the second component. Moving further, we see third component would be the expenditure that the government makes on the final goods and services produced by any firm. So again, government की भी कुछ demands रहेंगी, तो to meet those demands, government भी कुछ expenditure करेगी, that will denote by capital G. So third components become government expenditure. And lastly, we'll take up the export revenues. यहाँ पे हम net export revenue की बात करेंगे जो firms earn करती है by selling their goods and services abroad. And इसमें से will subtract जो हम import करने के लिए pay कर रहे हैं. तो यहाँ पे will calculate the net value and net exports आप लोग बोल सकते हो. तो that would be total exports जितना हम कर रहे हैं क्योंकि exports करने से हमें कुछ amount earn हो रहा है minus द इम्पोर्ट्स. तो इम्पोर्ट अगर हम करेंगे तो हमें कुछ पे करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके विल गेट द नेट एक्सपोर्ट्स. सो एक्सपोर्ट्स के लिए वी यूज द टर्म द सिंबल कैपिटल X, एंड फॉर इम्पोर्ट्स यूज M. So this is
This entire is the fourth component of the GDP calculation via the expenditure method. So sum total करेंगे हम इन चारों components का. These are all the revenues जो firm earn करेगी किस different तरीके से. So यहाँ पे firms लिखा है कि firms consumption expenditure कुछ receive करेगी जो वो goods sell कर रहे हैं. Against that कुछ investment expenditure भी उनको receive होगा जब other firms उनके capital goods जो उन्होंने produce करे हैं वो buy करेगी. Government फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगेन कुछ फर्म्स रिसीव करेंगी अगर गवर्नमेंट कुछ डिमांड करती है जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड देन नेट एक्सपोर्ट्स, फर्म अगर कुछ नेट एक्सपोर्ट्स कर रही है तो कुछ इनकम वुड फ्लो इन टुवर्ड्स दी फर्म. तो इसलिए यहाँ पे फर्म्स ही यूज किया गया है. It's a common term. So you can see कि this would be the identity that would hold up. So this becomes the GDP. यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो X है दिस इज नेट एक्सपोर्ट्स. ऑल राइट, मूविंग फर्दर, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन दिखा रखा है डिफरेंटली फॉर इम्पोर्ट. सो स्मॉल m वुड बी द सिंबल फॉर इम्पोर्ट्स. सो सपोज अगर हम जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो कुछ पार्ट है जो डोमेस्टिक कंपोनेंट्स डिमांड करते हैं, वो लोग एक्सपेंडिचर, वो लोग मनी स्पेंड कर रहे हैं. कुछ अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम गुड्स इंपोर्ट करने पे स्पेंड कर रहे हैं, तो वो हमें टोटल करके पूरा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है. ऑल राइट, तो इसको अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट वुड गिव अस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी. तो यहाँ पे डोमेस्टिक एलिमेंट आ जाएगा व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म्स. ऑलराइट, तो उन्होंने यहाँ पे सेपरेटली इम्पोर्ट्स के लिए अलग किया है. थोड़ा सा डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग बना सकते हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो. जस्ट अंडरस्टैंड दिस एलिमेंट नेट एक्सपोर्ट्स की जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, द कंसेप्ट बिहाइंड दैट. सो सिमिलरली टोटल किया इन्होंने C + I + G प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, दिस बिकम्स net exports. So this is showing the aggregate expenditure by the foreigners on the exports of the economy. Only X की हम बात कर रहे हैं exports की, तो foreigners जिनको हम supply कर रहे हैं अपने goods and services, वो लोग कुछ amount spend करेंगे तो वो हो जाएगा aggregate expenditure. जो foreigners spend कर रहे हैं वो हमारे लिए export income हो जाएगी. So this is the entire and the complete formula that would be there under the expenditure method. GDP would be, this is the identity symbol, will sum total for all the firms जो economy में exist करती हैं, will total the consumption expenditure, investment expenditure, government consumption expenditure and net export income that will get. All right, so with this was the simple expenditure method. How do we calculate GDP via this second method? And lastly, in the next lecture, we'll take up the third method, that will be the income method. So we'll take this up in the next lecture. Until then, you can just revise through all the topics that we've covered so far. And if you have any doubts, you can leave that in the comment section. And do subscribe to Ansarkari and keep watching.